Good afternoon, everyone. My name is Hitesh Angit from Mumbai Support, and I welcome you all to this 5-day webinar event. So basically, in this 5-day, we're going to learn how to use technical query with the help of price Ohlc, which means we will majorly focus on the pricing terms and its condition. Okay, so this 5-day will be linked so that you can use different condition and you will get the exact explanation of those condition of price Ohlc. So suppose if you want to join this, so please join every day so that you will get the maximum output of this condition and you can use it. So this topic is about the price Ohlc, because when we use price as well as indicators, so we'll get the maximum and the better output for our stock selection. So before we starting, I'll present you one shairi, and the shairi is कैंडल के ऊपर कैंडल हो तो कहते हैं हम राइज, कैंडल के ऊपर कैंडल हो तो हम कहते हैं राइज, उसी टॉप से रिवर्सल हो तो हम हो जाते सरप्राइज, उसी टॉप से रिवर्सल हो तो हो जाते हैं सरप्राइज। फिर ढूंढते रहते हैं एक अच्छे स्टॉक के लिए डिवाइस, फिर ढूंढते हैं एक अच्छे स्टॉक के लिए डिवाइस, स्पाइडर से अच्छा स्कैनर है जिससे ही मिलेगी आपको सही एडवाइस। So basically, we will merge price as well as indicator in this webinar so that you can get the best stocks for your intraday as well as the positional trading. So we're going to cover first day one, this condition which is related to the price. Okay, so I will explain each and every conditions in detail so that you can use in your technical queries. This is on day two, where we can use these breakout conditions for our better stocks. On day 3, we'll use the multiple price condition with the help of column values. And on day 4, we're going to use the condition which is basis of the candle and its base candles, which we say as the boring candles. And on the day 5, it's specifically on the price Ohlc for intraday stocks. Okay, so it's an intraday condition. So now we start with our first condition, which is rising from last and bust. So when we use a technical query, first we have to go to our spider, and in that we have to go to query. Query में आपको यूज करना है टेक्निकल क्वेरी, वहां पे ये विंडो है। सबसे पहले कोई भी क्वेरी बनाने से पहले we have to create in our mind so that we can create as per our setup. So basically, when you use a technical query, you can use any conditions, and first you have to click on condition 1 or any condition. So in that, first you have to go to price Ohlc. Okay, you can see there are two conditions, price Ohlc and price Ohlc for intraday query only. So in this condition, we are using rising from last and bust, which is in price Ohlc. So when I click on price Ohlc, you can see at the bottom there in a black the price Ohlc is highlighting. So first we have to click on that, and then we have to go to parameters so we can change the time frame as well from here. Okay, and here in the condition you will get this first condition, which is price for last and bars. Okay, so when I click on this rising for last and bars, which means we are discussing about a candle which is continuously rising. Okay, so basically you can see if I use this rising condition, which means कि सर्टेन कैंडल से वो राइज हो रहा है। जैसे करंटली अगर मैं यहाँ पे देखूं नंबर ऑफ बार्स अगर मैं 2 यूज कर रहा हूँ, सो करंट कैंडल लास्ट 2 कैंडल से राइजिंग है या नहीं है वो देखने मिलेगा, विच मीन्स जो लास्ट 2 कैंडल है वो भी राइजिंग है। यू कैन सी द क्लोज इज कंटिन्यूसली राइजिंग। ओके, सो वो कंडीशंस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो जब मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यू कैन यूज एनी ऑफ द इनपुट, which means अगर मैं ओपन से ओपन कंपेयर करूं या हाई से हाई कंपेयर कर रहा हूं सारे कैंडल्स का, या लो से लो या क्लोज से क्लोज। ओके, जो मैंने एग्जांपल लिया वो मैंने क्लोज कर लिया। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नंबर ऑफ 2 कैंडल्स, which means करंट कैंडल को छोड़ के पास्ट की 2 कैंडल से वो कंपेयर कर रहा है। सो इन दिस कंडीशन if I choose an input of a close and number of bars 2, so it will compare
last two candles and accordingly it will give a results. तो सपोज अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इसके बाजू में और अगर मैं रन कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसे कैंडल्स होंगे सो इट विल शो. ओके, सो मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया है, ओके, नाउ इट विल रन एंड इट विल गिव द स्टॉक्स. सो जो भी राइजिंग में स्टॉक होंगे वो सारे दिखाएंगे लाइक एबीसी कैपिटल. ओके, सो अगर वहां पे कंटिन्यूसली वो राइजिंग होगा तो वो हमें दिखाएगा. ओके, सो जो भी क्लोजिंग है, अगर आप ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया और ये क्लोज हो गया, तीनों राइजिंग में, अदानी, ये करंट कैंडल से यू कैन सी कंपेयर द लास्ट टू कैंडल्स इज राइजिंग. So basically this condition will help you to getting a stock which is continuously rising और जो लास्ट दो कैंडल्स है वो भी राइज हो रहे हैं. So it's a condition for continuously bullish. Okay, so ये आप यूज कर सकते हो अपने टेक्निकल क्वेरी में फॉर राइजिंग स्टॉक्स. सेम वे इसकी ऑपोजिट कंडीशन है वो है फॉलिंग फॉर लास्ट एंड बार्स, which means your current candle close is below the last two candles close or whichever the input that you will use. So in this condition I am using the same way, I'll use the falling for last and bars. So it will be exactly vice versa of the rising for last and bars. So I can use the input and accordingly we can create a technical query. So suppose अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि last दो कैंडल से it's falling, तो मैं इसको मॉडिफाई करके मैं इसको रन कर सकता हूँ. तो जो स्टॉक्स जो लास्ट दो कैंडल से गिर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्लोजिंग, सो वो दिखाएंगे. लाइक यू कैन सी दिस इज द करंट कैंडल्स क्लोज. ओके, सो यू कैन कंपेयर द प्रीवियस कैंडल and also with the previous and that candle, so that you can see the last two candles current low is smaller than the last two candles. So basically it will compare the last two candles low. Now at the same time, suppose you can also see the low is continuously falling. So in this condition there will be continuously falling from last two candles. So if I use the low, it will falling as compared to low. But if I use for close, so it will be continuously making a new close which is falling. Okay, so यहाँ पे अगर आप एप्पल हॉस्पिटल देखो तो ये भी क्लोजिंग इसकी नीचे है लास्ट दो कैंडल से. Okay, so this condition we can use. But suppose when we use this condition, there is another option of a check count and the back bar. इसका मतलब क्या है? ओके, सो बेसिकली काफी बार जब हम कुछ कंडीशंस फॉर्म करते हैं, सो हमें डिफाइन करना होता है प्रीवियस कैंडल एज वेल एज करंट कैंडल. सो सपोज अगर मुझे कोई कैंडल को प्रीवियस कैंडल को डिफाइन करना है, लाइक एग्जांपल कि कोई कैंडल है जो करंट कैंडल पर रेड है बट प्रीवियस कैंडल ग्रीन है. तो जब मैं प्रीवियस कैंडल लूंगा तो वहां पर मुझे 1 डालना होगा कि मैं प्रीवियस कैंडल को डिफाइन कर रहा हूँ. बट राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस कंडीशन फॉर द करंट बार, सो दैट आई विल यूज 0 हियर. ओके, सो ये nth बैक बार यूज करते हैं हम जब आपको कोई प्रीवियस कैंडल को डिफाइन करना है. ओके, सो these are the conditions of rising and the falling for last n bars. Okay, so that you can use. Now the third condition is between. Okay, so between is a condition in the price Ohlc where we have to define the stock value. जैसे एग्जांपल अगर आपको स्टॉक्स चाहिए, ओके, लाइक आपको क्लोजिंग प्राइस चाहिए 200 से लेके 1000 के बीच में. ओके, सो ये डिफाइन करेगा कि उस रेंज में जो स्टॉक्स है ना वो आपको दिखाएगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस. सो यू कैन सी ABFL है वो 308 पे, आप यहाँ पे करंट प्राइस आप चेक कर सकते हो. सो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई स्टॉक्स फाइंड आउट करना है जहां पर आपको क्लोजिंग बेसिस या जो भी आप इनपुट यूज कर रहे हो वो स्टॉक बेसिस के वैल्यू बेसिस पे आएगा कि उस स्टॉक का रेट क्या चल रहा है. ओके, सो सेम वे इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपका जो भी ओपन प्राइस है वो लो और हाई के बीच में हो, जो भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे. ओके, जैसे अगर एग्जांपल अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ पे डाला तो मुझे हाई लो क्लोज हर एक में मुझे बिटवीन का ऑप्शन है कि मुझे कौन सा रेंज से कौन सा रेंज के बीच में चाहिए. ओके, दिस कंडीशन इज ऑल्सो इन द टेक्निकल क्वेरी फिल्टर. ओके, यहाँ पे अगर आप देखो ये रेट वाला, ओके, तो सेम कंडीशन है
Okay, so if someone wanted to specify, so they can use this, और अगर आपको ओवरऑल देखना है तो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो. ओके, सो ये है बिटवीन कंडीशन. एट द सेम टाइम अगर आप उसके ही नीचे देखो, सो वहां पे एक ऑप्शन है अबाव का. ओके, कि अगर आपको कोई कैंडल है या उसका स्टॉक का वैल्यू है वो मोर देन सर्टेन वैल्यू चाहिए. जैसे एग्जांपल, काफी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि दे वांटेड अ स्टॉक व्हिच इज मोर देन 1000. ओके, सो उसके लिए हम अबाव का कंडीशन यूज कर सकते हैं. अबाव हाई लो क्लोज जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, एंड वैल्यू इज अबाव 1000. सो इफ आई मॉडिफाई एंड इफ आई रन, ओके, सो वो 1000 के ऊपर के रहेंगे. ओके, तो आप यहाँ पे चेक करो, आरती इंडस्ट्रीज है जो 1100 का है, अबाउट इंडिया है, सो मिनिमम 1000. उसके ऊपर जितना भी होगा वो उसके ऊपर का आपको वैल्यू दिखाई देगा. सो इन शॉर्ट, यहाँ पर जो फिल्टर में आपको बिटवीन कंडीशन है बट अबव कंडीशन नहीं है. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस कंडीशन. तो जो स्टॉक्स मोर देन 1000 के ऊपर है वही ये फिल्टर करके देगा. ओके, एट द सेम टाइम इसके नीचे जो एक और कंडीशन है वो है बिलो का. ओके, जहां पर आप जो कंडीशन है वो अगर आपको कोई स्टॉक्स के नीचे चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे डाला हूँ 1000 बिलो में, तो जो 1000 के नीचे के जो स्टॉक्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे. ओके, सो बेसिकली ये हमें तब हेल्प करता है जब आप किसी पेनी स्टॉक को फाइंड आउट कर रहे हो. सो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ कि बिलो लेस देन सपोज 50, तो जो 50 में जो पेनी स्टॉक्स के जो होंगे वो स्टॉक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. लाइक एग्जांपल, ये 1000 जगह पे मैं आपको डालता हूँ 50, जो स्टॉक्स 50 के नीचे ट्रेड हो रहे हैं वो खाली मुझे दिखाई दे रहे हैं. सो मैंने यहाँ पे ग्रुप लिया है एफएनओ स्टॉक्स का ही. ओके, सो अगर आप यहाँ पे पूरा अगर एक्सचेंज लेते हो, ओके, तो आपको वहां पर जो है वो स्टॉक्स जो लेस देन 50 है वो आपको मिल जाएंगे. जैसे करंटली मुझे एफएनओ ग्रुप में खाली जीएमआर इंफ्रा, ओके, विच इज 45 रेट, आइडिया विच इज एट 12.60, आईडीएफसी फर्स्ट which is at 49.15, and PNB जो है 40.25. So ये 5 stocks here which is in this F&O group. So basically we are defining the value of the stock in our technical query. Okay, so this you can use to filter out as per the rates. Now the third, the next condition is open above previous bar high. Okay, so basically this condition will help you when a candle making open is greater than the last high. Example, suppose if I click and यहाँ पर open above previous bar high. Okay, so when you use this we can modify and we can add. Okay, now if I run all these 500 stocks, so you can see we got the 13 stocks. Okay, so BPCL you can see यहाँ पर जो उसका जो हाई है उसके ऊपर उसका ओपनिंग है. ओके, सो दैट यू कैन यूज कोफॉज. अब कोफॉज में अगर आप चेक करो तो इसका जो हाई है, ओके, इसका हाई है 5710. ओके, एंड इसका ओपनिंग है 5710.13 पॉइंट्स में ऊपर है. सो एट द एंड द ओपन इज हायर देन द प्रीवियस हाई. Sorry to interrupt. Can you disable webcam so everyone can see the larger picture of the software? Yeah, perfect. Okay. Yeah. Okay. Now it's visible. It's visible, yeah. Yeah. Okay. Cool. तो हाँ, अब यहाँ पे जब आप चेक करो जैसे HAL है, ओके, यहाँ पे वो हाई है एंड इसके साथ में अगर हम ओपन कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे हायर है. So in the same way, just a single condition will define you and give you a good stock which are which are opening higher than the previous high. So एक kind of है जो हम use कर सकते हैं अपनी bullish stocks के लिए. At the same way, हमारा दूसरा जो इसके exact opposite condition है वो है open below previous bar low. Okay, so अगर हम यहाँ पे चेक करें, so open below previous bar low. So previous bar का जो लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे उसका ओपनिंग हुआ है.
So it can be a red candle or it can be a green candle, but opening उसका comparison होगा. Okay, so वो चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे and will add और रन करते. So आप यहाँ पे चेक करोगे सिप्ला. So ये जो सिप्ला का प्रीवियस जगह जो कैंडल है जो 14th का है उसका लोएस्ट है 916.30. ओके, एंड इसका जो ओपनिंग है वो 915.60 करंट डे का. ओके, सो ओपन इज लोअर देन द प्रीवियस कैंडल. सो इन द सेम वे वी विल गेट दिस स्टॉक्स. देखो ये कैंडल ग्रीन है बट स्टिल इसका ओपनिंग नीचे था. ओके, सो बेसिकली दिस कंडीशन open above previous bar high and open below previous bar low, which is a kind of a pattern which we use in piercing candle or a dark cloud cover candle pattern. Okay, so उसी तरीके से you will get this stocks results. Okay, so one is bullish and another one is the bearish condition, so that you can use for stock scanning. Now the next condition is gap up still open. Okay, so as we know gap up stocks find out करने के लिए हमें इवेंट सिलेक्टर भी है हमारे पास. ओके, आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा. ओके, गैप अप. बट सपोज इफ यू वांटेड इन योर टेक्निकल क्वेरी, ओके, सो आपको प्राइस ओएचएलसी में यू हैव टू गो एंड देयर इज अ कंडीशन गैप अप स्टिल ओपन. ओके, so when you use this condition you will get the stocks which are gap up as compared to previous days high. Okay, so जब आप इसको रन करोगे, okay, so none of the stock is above the previous days, none of the stock is above the previous days high. So अगर मैं यहाँ पे इसको change करके I'll change a group to Nifty 500. Okay, so यहाँ पे वो लोड कर रहा है and if any stock is there but which is still open. Okay, so यहाँ पे है कैस्ट्रॉल इंडिया. Okay, you can see कि ये जो है इसका जो हाई था and it's open. Okay, वहाँ पे कहीं पे भी कुछ टच नहीं है, there is clearly gap. And अगर आपको गैप देखना है, for that you have to press Control Y. Okay, so you can see there is a gap. Okay, अगर आपको कुछ गैप से कंडीशंस आपको मॉडिफाई करने, आपको कलर्स मॉडिफाई करने, for that you have to press right click on the chart and there is an option of a chart setting. Okay, so when you use the chart setting there is an option of a levels, sorry gaps. Okay, this is gaps. So you can see there are multiple of options in the gaps, so you can click and you can alter as per your line style. Okay, and as for that you can change as well the thickness. So color, style and thickness you can modify and you can set. Okay, so suppose if it's there is a gap up or a gap down, you will directly get a line at the top or at the bottom. So when you press Control Y, you will get these gaps. Okay, so ये current scenario you can see the Castrol India, the opening and the low is higher than the previous candles are. Okay, so यहाँ पे अगर आप देखो gap up with still open, मतलब उसका जो gap है वो filled नहीं हुआ है. Same way अगर आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी सेम सिनारियो. ओके, यू कैन सी इजिली अ गैप्स. तो यहाँ पे दोनों जगह पे आपको गैप्स मिल रहा है, क्लियरली दिख रहा है. ओके, IRFC सेम वे यू गेटिंग गैप अप. ओके, यहाँ पे क्लियर आपको व्यू मिल रहा है कि यहाँ पे गैप्स है. सेम वे जेके पेपर रेड कैंडल है बट स्टिल इट्स अ गैप बिकॉज वो फिल्ड नहीं हुआ है. अगर वो फिल्ड हो गया होता तो वो गैप अप स्टिल ओपन में नहीं आता. Okay, so basically you will get a gap up stocks. Okay, this Symphony, Trident, all. So these are the gap up stocks. Okay, now at the same way we can use the gap up, gap down, still open condition. Okay, I can modify and you can see the same condition which is exact opposite to gap up, still open. Okay, candle अगर आप use कर रहे हो, so opening and the high is below than the previous day low.
Okay, so it can be a green candle or it can be a red candle, but at the end there will be none of the body or a wick should touch the previous bar low. Okay, so same way हम यहाँ पे रन करेंगे और कोई स्टॉक्स है जैसे HCL टाइप. ओके, ये आज का फ्रेश कंडीशन है. यू कैन सी मोर देन 5% नेगेटिव है, जहाँ पे प्रीवियस लो से वो नीचे ओपन भी हुआ है और उसका बॉडी भी टच नहीं किया है. So this is a clearly gap down signal. ओके, इकाल इज देयर, वो भी एक आपको नेगेटिव स्टॉक्स मिल रहा है जहां पे वो प्रीवियस डे से वो नीचे है. ओके, सो टच नहीं हुआ. वेदांता, ओके, TTML. ओके, सो बेसिकली दीज आर दी 4 स्टॉक्स. ओके, सो ये आपको यहाँ पे स्कैनिंग के लिए मिलेंगे. So suppose if someone wanted to make a query on the gap up and gap down, so they can use this condition, and with the help of this condition they can also use some other indicators to confirm their trend. Okay, now question arises, what is the difference between the open above the previous condition, which is open above previous bar high, okay, and the gap up still open. Okay, because दोनों कंडीशन ऑलमोस्ट सेम ही है, बस खाली फर्क एक है कि जब आप यहाँ पर ओपन अबव प्रीवियस बार हाई है, सो वो खाली ओपन और प्रीवियस बार हाई के साथ ही कंपेयर करेगा. आइदर वो बाद में बॉडी टच होके नीचे आए ना आए, उससे उसको कुछ नहीं करना, बस जस्ट ही वांटेड टू चेक द हाई एंड द ओपन. बट व्हेन वी यूज गैप अप स्टिल ओपन, व्हिच मींस वो गैप अप ही होना चाहिए और उसका बॉडी टच भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ इट टच द प्रीवियस हाई देन इट विल कंसीडर एज अ फिल्ड, गैप फिल्ड, सो वो रिजल्ट नहीं देगा. So this is the basic difference between open above previous bar high and gap up still open. Okay, so these two conditions you can use. Okay, so now the other condition is green body. Okay, so when we go to green body, which means suppose if you wanted to define a candle, so for that you can use a green body. Example, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और वहाँ पे कंडीशन है ग्रीन बॉडी. सो अगर मुझे कोई भी कंडीशन, अगर मैं कोई भी क्वेरी बना रहा हूँ और मुझे कोई भी इंडिकेटर के साथ मर्ज करना है, एंड इफ आई वांट टू स्पेसिफाई कि वो ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए, दैट कैंडल शुड बी ग्रीन, सो फॉर दैट you can use this condition. So when you click on green body, you can see Aarti Industries, Awas, okay, your current candle is green. Okay, ABC Capital, Adani green. Okay, so these are the stocks. Out of 500, 220 are green candles. Okay, which means your close is greater than your current day open. Okay, so वो green है और at the same time there is a green body. Okay, so we can easily specify the green body. Okay, same way we have a red body condition. So suppose यहाँ पे open and close will be compared, and close is smaller than the open. So example, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, okay, same way I can go to red body. Okay, so if I go to red body and if I click, I'll get the red body stocks. So यहाँ पे जब आप यूज करोगे, so you can see भले छोटा सा difference, but it will show you a red body. Then about clearly red body, ABFRL red body, okay, ACC sorry, so it's a red candle. So basically अगर हमें कोई कैंडल को डिफाइन करना है, then we will use this candle, this body. Okay, so generally ये चीज हम यूज तब करते हैं when you wanted to make a query for particular candle, or suppose if you wanted to make a any candlestick pattern, so that time you can use this color, okay, body color, so that you can use. So now suppose in the same way जैसे मैंने previously आपको बताया था कि अगर suppose if I wanted to use the nth back bar, okay, so yeah, so अगर मेरे को find out करना है वो कैसा है, so for that suppose
मुझे यहाँ पे डबल क्लिक किया, मैंने दो कैंडल की कंडीशन डाली है। फर्स्ट इज ग्रीन बॉडी, जो कि मैंने nth बैक बार 1 रखा है, ओके, एंड द रेड बॉडी जहां पे मैंने यहाँ पे nth बैक बार 0 रखा है। मींस मैं चाहता हूं कि प्रीवियस कैंडल ग्रीन हो एंड करंट कैंडल रेड हो, ओके, दैट वी कैन यूज। सो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीज हमें वो दोनों कंडीशन को यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे मुझे क्लिक करना है रिलेशन पे, ओके, रिलेशन, ताकि मुझे ये दोनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए और वही स्टॉक्स मिलने चाहिए। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे रिलेशन पे टिक करना है, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडीशंस। सो मुझे वहां पे रिलेशन पे टिक करना है एंड देन मुझे यहाँ पे नीचे रिलेशनशिप में मुझे कंडीशंस ऐड करने हैं। सो कंडीशंस का शॉर्ट फॉर्म है सी, ओके, एंड कंडीशन 0 एंड 1 है वो। जहाँ पे मैंने ग्रीन बॉडी डाली वो 0 है और जहाँ पे मैंने फर्स्ट कंडीशन डाली है वहां पे रेड बॉडी है। तो सी 0 space a and d and c1, okay, we can use this a and d or we can use the symbol of and, okay, वो दोनों कंडीशन डालने के बाद अगर मैं उसके बाजू में लेफ्ट में क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे जो भी मेरे को डिस्क्रिप्शन देना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला वेरी स्टॉक, बिकॉज मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूँ कि प्रीवियस कैंडल ग्रीन है और करंट कैंडल रेड है, ओके। अगर मैं अब रन करूंगा तो मुझे वो फिल्टर होके वही स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पे ये फॉर्मेशन हुआ है, ओके। तो अगर मैं आरती इंडस्ट्रीज में देख रहा हूँ, आपको दिख रहा है प्रीवियस कैंडल इज ग्रीन एंड करंट कैंडल इज रेड, अदानी ग्रीन रेड। तो सेम वे हम यहाँ पे जो कैंडल्स के अंदर जो जो हम फॉर्मेशन चाहिए वो हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ nth बैक बार। सो ये nth बैक बार आपको हर कंडीशन में मिलेगा वेयर वी आर एक्चुअली डिफाइनिंग द प्रीवियस कैंडल, ओके। यहाँ पे 0 है इसलिए वो करंट कैंडल है। ग्रीन कैंडल पे अगर हम यूज करेंगे, जैसे मैंने 1 किया बिकॉज मैं प्रीवियस कैंडल को डिफाइन कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 करता तो वो ये कैंडल को कंपेयर करता, ओके। सो दिस वी कैन यूज इन अ टेक्निकल क्वेरी। नाउ अगर मेरे को यही क्वेरी जो है ये मैंने डेली में बनाई है, अगर मुझे वही कैंडल जो है अगर वीकली में बनानी है, कन्वर्ट करनी है, सो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कमेंट्स। आपको यहाँ पे कमेंट्स में क्लिक करना है, यही क्वेरी है, आपको यहाँ पे पीरियड में एक ऑप्शन दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे आपको वीकली ले लेना, ओके। सपोज व्हेन यू यूज अ वीकली and there is an option of a change period to condition, which means if I click on all, it will change the period to all conditions and I have to click on change, okay. So you can see now it's a weekly WKL, okay. So price green body, so it's converted into weekly. So suppose if I run this, so this time it will give me a result on weekly. So for that first I have to convert into weekly and then I have to click on this. So you can see at the bottom of the chart, it's a weekly chart, and you will get a stock on the basis of the this scanner. Okay, so we can change any condition if you want to specify those conditions. So first, click on that condition, and then go to comments, and then there is an option of selected. So पहले आप select कीजिए उस condition को, and then आपको यहाँ पर आके आपको select करना है, and then you have to click on change. So once you click on change, so वो particular condition change होगी। लाइक सपोज अगर मैं इसको मैं मंथली करता हूँ, सो यू कैन सी ये जो सेकंड फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन 1, उसका टाइम फ्रेम अगर आप चेक करो, सो इट्स कन्वर्टेड इनटू मंथली। सो यू विल गेट अ स्टॉक्स on a weekly which is a green body and on monthly it will be on a red body. So this is how you can convert your time frame in technical query, okay. So now we are moving on, यहाँ पे कंडीशंस है green body for last n bars, okay. So basically ग्रीन बॉडी एक कैंडल को तो हम डिफाइन कर सकते हैं, बट सपोज अगर कोई स्टॉक कंटिन्यूसली मूव कर रहा पॉजिटिव और कंटिन्यूसली नेगेटिव है, सो टू फाइंडिंग आउट दो स्टॉक्स वी कैन यूज दिस कंडीशन, ओके। सो इन प्राइस OHLC वी हैव टू गो टू कंडीशंस एंड देयर इज एन ऑप्शन ऑफ अ ग्रीन बॉडी फॉर लास्ट एन बार। सो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, अगर मुझे करंट कैंडल है तो बैक बार 0, ओके, एंड मुझे कितने कैंडल्स में मुझे कंपेयर करना है, तो मैं डालता हूँ 5 कि मुझे 5 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स चाहिए,
ओके, सो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ. सो नाउ अगर मैं जैसे इसको ऐड कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो स्टॉक्स है वो कंटिन्यूसली 5 ग्रीन बॉडी बनाएगा. सो नाउ अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके, कंडीशन पे टिक करता हूँ और मैं रन करता हूँ, सो आउट ऑफ 500 जितने भी स्टॉक्स होंगे जिसमें कॉन्जिक्यूटिव 5 बॉडीज बनी होंगी, जैसे नहीं आरती. ओके, अगर मैं 5 बॉडीज डाल रहा हूँ तो 1 2 3 4 5. सो आप यहाँ पे जब चेक करोगे तो करंट कैंडल इज इंक्लूडेड इन 5 आवर्स. ओके, सो अगर मैंने 4 डाला होता तो ये जो 4 कैंडल्स है वही कंपेयर होता. ओके, सो आपको यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव जो 5 कैंडल्स रहेंगी वो हमें यहाँ पे दिखा देगा. ओके, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा. सो आप ये यूज कर सकते हो. दिस इज अतुल. ओके, सेम वे if I click on red body for last in bars and number of bars 5 और modify करूंगा, so it will give me result. Okay, consecutive red 5 bodies. I think it's sorry, it's a weekly chart. Okay, it's a daily chart. So now you can see the consecutive 5 red bodies. Okay, so now at the same time APLL you can see 1 2 3 4 5. Okay, so you will get a 5 red bodies. At the same time Asian paints. Okay, so you will get a 5 red bodies. So you can use this condition to finding out a stock which is making continuously red or green bodies. So इसका better way कैसे use कर सकते हैं कि अगर एक stock continuously काफी कैंडल से fall हो रहा है तो there will be chances that it may retrace. ओके, सो उसको आप क्या कर सकते हो कि अगर एक स्टॉक लास्ट 5 और 7 कैंडल से अगर फॉल हो रहा है, सो आप उसको रिट्रेस के आसपास जब आए लाइक 50% रिट्रेस हो, देन यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट बिकॉज अगेन वो मूव होके पीछे आ सकता है. तो सेम वे लाइक यू कैन सी दिस इज अबाउट. ओके, सो हम यहाँ पे चाहिए तो रिट्रेसमेंट लगा के आई कैन ऐड अ रिट्रेसमेंट फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम. Okay, so I can take a fresh position over here for shorting because इतना ज़्यादा fall हुआ है, so expected है कि कभी भी reverse कर सकता है. Okay, so for this you can use this condition. Okay, you can use for intraday as well, or you can use for positional as well. Okay, so this is the condition that you can use for finding out a negative trend stocks. Okay, which I already shared. It's a red body for last and bars and green body for last and bars. Now this webinar is interlinked with the next 4 webinars. Okay, so जो condition हमने आज देखी है उसके अलावा जो different conditions है वो हम यहाँ पे next webinar में देखेंगे which is tomorrow. Okay, so जो link है वो chat box में भी आ चुकी है, आप वहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हो और आपको आपके नंबर पे भी आपको मिल जाएंगे. ओके, सो अब जो कल जो वेबिनार में जो कंडीशंस होंगे, okay, which is basically related to the breakouts. Okay, so अगर आप देखोगे कि नेक्स्ट डे के लिए कौन से कंडीशन होंगे, वो है इनसाइड बार्स, आउटसाइड बार्स और जो अपवर्ड ब्रेकआउट्स हैं 1 2 3 और कैंडल बेसिस पे जो बॉडी साइज है वो सारी चीजें हम वहां पे देखेंगे. ओके, सो उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. यू कैन गो टू द चैट बॉक्स एंड आप उसको वहां पे रजिस्टर कर सकते हो. Okay, so if you have any queries you can contact us on the support details. Okay, so we'll happy to help you and see you tomorrow at 4 with the new price Ohlc conditions, and we'll also cover a small revision on the previous days which we covered today, and later we'll discuss with that particular day's conditions. Okay, so you can contact us on these details. If you need any help, we are happy to help you. Thank you for joining today's webinar.